So hello everyone, welcome back to this amazing channel. I hope you all are doing great. So आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे द प्रॉब्लम 1508 ऑन लीड कोड दैट इज रेंज सम ऑफ सॉर्टेड सब एरे सम्स राइट. सो जल्दी से देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, व्हाट आर ऑल द रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, हम लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे. सो लेट्स क्विकली सी दैट फर्स्ट. ओके. So in this you are given an array nums consisting of n positive integers. You computed the sum of all non-empty continuous subarrays from the array, right? So here you are given an array nums and n की value 4 है, left is 5, sorry left is 1 and right is 5. ठीक है, आपको बताना है कि लेफ्ट इज 1 एंड राइट इज 5 के लिए हमारे पास क्या टोटल सम होगा फॉर द सब एरेज. ठीक है, let me show you an example. So listen, here you are given an array 1 2 3 4 and the n is 4, left is equal to 5 and right is equal to 5, right? This is your whole input which is given in the question itself. So let's quickly see uh, the procedure. So here your task is to compute all the subarrays, and if you have heard the subarrays then you are probably known that what are the subarrays. Like this is in subarray, this is a subarray, this is a subarray, this is a subarray. So all these are the subarrays and we need to compute the sum. So if we will see 1 2 3 and 4 will be the sum of these subarrays, and then this will be a subarray, this will be a subarray, and this will be a subarray, right? So what we will see, 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 4 is 10. So this is for 1 and for 2 it is 5 and it is 5 plus 4 9, and for 3 it is 7 and for 4 we have already taken, right? So if we will clearly see, so for 1 we have the combination of 1 3 6 and 10. For 2 we have the combination of 2 5 and 9. For 3 we have the combination of 3 and 7, and for 4 we have the combination of 4. So these are the all subarrays which we have computed. And if I will show you the formula, so here it is 4 plus 3 plus 2 plus 1. So it is nothing but n plus 1 by 2. Right? This is the formula to compute the number of subarrays in any array. Right? So yeah, let's quickly move. So our task is to compute all the subarray sums and then we will have to sort it. Okay, the next step here is to sorting the array. So if you can see this array clearly, so we will sort this array such as 1 2 3 3 4 5 6 7 9 and 10. Okay, so this is my subarray sums, and now your task is to return the left 1 and right 5 ka sum. So this is your 1 2 3 4 5. So your task is to return the subarray sum for this array, right? So it is 4 plus 3 7 plus 3 10 12 13. So your answer will be nothing but 13, right? So this is your answer equal to 13. I hope the question and as well as the example is pretty much clear till now. Let's move to the algorithm. So जिसको हम लोग बिल्ड द लॉजिक भी बोलते हैं. ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, अभी ये वीडियो तो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, so sorry for that, but yeah, I will definitely try to uh, make the videos regularly, right? So let's see the logic. So the first thing is compute the subarrays. So it will, like, you are already very much familiar about the to loop formula for the arrays. It is I equal to 0 till I say less than n, and it is I plus plus, and इसी तरीके से आप j को भी 0 से लेके n तक कंप्यूट करोगे and you are pretty much go. ठीक है, जैसे अगर आपका 1 2 3 4 अगर एरे है तो आप 1 पर पहले वाले को फिक्स कर दोगे I equal to 0, एंड फिर आप पूरे पर मूव करोगे फ्रॉम 0 till n. So you are nothing but able to compute 1 3 6 and 10, right? And you will store this sum equal to what is this array of j, right?
एंड फिर आप इस जो सम आपका आया है दैट यू आर गोइंग टू पुश इन अ सब एरे डॉट पुश बैक। ठीक है, पूरा सिंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, दैट वी विल सी इन द कोड इन द लेटर हाफ। सो इट इज सम। ठीक है, इस तरीके से आपने पुश कर लिया। सो दिस सब इज योर द एंटायर एरे इन विच योर डेटा इज स्टोर्ड। सो नेक्स्ट योर टास्क इज टू सॉर्ट दिस एरे। ठीक है, तो हम सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें पता भी है सब डॉट बिगिन। ठीक है, और हम लोग बहुत टाइम से कोडिंग कर रहे हैं तो वी नो दैट सब क्या मतलब सॉर्टिंग कैसे करते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, अगर आपको ये भी चीज़ें नहीं पता है सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप पहले बेसिक्स अपना क्लियर करो, देन इट इज़ प्रीटी मच गुड टू गो। ठीक है, बिकॉज बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपने सॉर्ट कर लिया यहाँ से एंड देन व्हाट यू विल डू हियर इज कि आपको सबसे पहले जैसे जो भी आपका लेफ्ट दिया हुआ है दैट इज़ योर 1 एंड आपका कुछ राइट दिया हुआ है दैट इज़ योर 5 हियर। तो आपको उस सब एरे में से पूरा आइटरेट करके दैट विंडो फाइंड आउट करनी है जो कि स्टार्ट हो रही है लेफ्ट से एंड एंड हो रही है राइट से। ठीक है, यू विल हैव टू फाइंड दिस विंडो। अब इस विंडो के अंदर आपको पता चल गया कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो यू विल जस्ट सम दिस एंड रिटर्न दिस एज एन आंसर। और उसके साथ एक कैश यहाँ पर ये भी है कि ये जो सम है दैट कैन बी आउट ऑफ इंटीजर। ठीक है, आउट ऑफ बाउंड भी जा सकता है। तो आपको क्या करना है, देयर इज देयर इज एन एडिशनल स्टेप हियर जो कि है हमारा मॉड्यूलो। ठीक है, so that is nothing but 1e9 plus 7। तो 1 is e9 is nothing but 1 plus 9 zeros। ठीक है, सो दिस विल बी योर मॉड्यूलो। तो आप इससे जब मॉड्यूलो करोगे सो इट विल बी इन दी आउट ऑफ बाउंड से जो एरर आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो जो भी आपका सम है आपको उसको मॉड करके रिटर्न करना है। ठीक है, सो दिस इज द होल एल्गोरिथम। लेट्स क्विकली चेक द कोड। ठीक है, लेट्स क्विकली चेक द कोड। सो वी आर नथिंग बट टेकिंग अ वेक्टर ऑफ इंटीजर दैट इज माय सब। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक लूप चला देंगे। आई एम नॉट कंप्यूटिंग द सब एरे का साइज बिकॉज इट इज नॉट नीडेड। ठीक है, दैट इज द एडिशनल स्टेप वी कैन डू। ठीक है, ओके, जे की वैल्यू 0 से लेके एन तक आई हैव रन। ठीक है, सम में मैंने प्लस करा लिया दैट इज माय नम्स का जे। राइट, दिस इज व्हाट वी कैन डू हियर। एक सम भी ले लिया दैट इज इनिशियली एट 0 एंड सब में मैंने पुश करा लिया दैट इज माय सम। ठीक है, सम को मैंने पुश करा लिया यहाँ पे एंड नाउ व्हाट यू कैन डू हियर इज कि सॉर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, सब डॉट बिगिन से आपने चलाया सब डॉट एंड तक। राइट, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आप सिंपली एक लूप चलाओगे दैट विल बी योर लेफ्ट एंड राइट तक चलेगा। और यहाँ पर एक छोटा सा कैश क्या है कि आपका जो भी आंसर है उसमें आपको प्लस करना है आपका जो भी सबका आई है बट i-1 बिकॉज यहाँ पे जो लेफ्ट है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से एंड हम लोग क्या सोच के चलते हैं हमारा जो स्टार्ट होगा आई वो 0 से होगा, 0 बेस्ड इंडेक्स से। सो ठीक है, अभी मैंने दो वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ किए, जल्दी से उनको भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। आंसर इज इनिशियली एट 0, मॉड इज 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। राइट, सो दिस इज माई मॉड एंड लेट्स क्विकली द आंसर रिटर्न। ठीक है, सो दैट विल बी माई आंसर। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ठीक है, मेरा सब एरे बन गया, पुश कर लिया मैंने माई सम। ठीक है, लेट्स क्विकली चेक इफ इट इज़ वर्किंग। Okay, so there is some problem here. Yes, let's quickly resolve this error. So I is equal to 0 से n तक चलाया मैंने, that is j। ठीक है, तो इस सम को मैं बाहर ले लेती हूँ। सम को मैंने जैसे लाइक पुश करा दिया, पुश बैक सम एंड फिर मैंने सॉर्ट किया। ठीक है, इट इज़ प्रीटी मच फाइन टिल हियर। आंसर की वैल्यू 0 है, मॉड की वैल्यू ले ली मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एंड लेफ्ट से लेके राइट तक चलेगा। ओके, इट इज़ इक्वल इक्वल टू राइट। ठीक है, बिकॉज इक्वल टू तक ही चलाना पड़ेगा हमें, हम i-1 की वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इट इज़ नॉट करेक्ट अगेन।
Let's see what is wrong here. Okay, left is this answer plus. It is showing 7 as an answer. Okay, and it is showing 2 as an answer. Acha, let's quickly resolve this error. So yes, we have done a very small and crazy mistake here. That is कि हम लोगों ने j की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर ली है, बट इट इज इनिशियलाइज्ड फ्रॉम i. ठीक है, बिकॉज जैसा कि आपने देखा भी होगा, अगर हम 1 2 3 4 एग्जाम्पल की बात करें तो 2 के लिए हम लोग सिर्फ 2 से ही स्टार्ट कर रहे थे rather than starting from 1 अगेन. ठीक है, so this was the crazy mistake. Let's quickly see if it is working fine now. Right, so it is working fine. Let's try to submit this code. So yes, let's see. Yeah, as you can see, it is accepted and it beats 71%. And here a new feature is कि आप लोग basically analyze भी कर सकते हो. And let me show you the time and space complexity of this problem. So the time complexity here is O of n square log n, because of the n square is for the subarray part and log n is for the sorting part, and the space complexity here is O of n square, right? So yeah, this is the whole problem as well as the code. If you guys like this video, please make sure to subscribe my channel, like this video and share it with your friends for more such amazing content. See you soon in the next video. Till then, keep learning and keep exploring.